राइट। तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स है वो, तो जो सिचुएशन और टाइम है सोसाइटी में या नेशन की, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो चेंजेस उसमें रोट आउट करते हैं. एंड इट आल्सो अपहोल्ड द सर्टेन मॉरल प्रिंसिपल्स. इन केस इज एथिक्स, देन यू कैन आल्सो मेंशन within the domain of the constitution that we uphold the constitution morality, हम डिस्कस कर चुके हैं, right. Then comes to the picture of the separation of power, because these organs ultimately work for the people's well-being. So certain fundamental rights are given to the people, and instrument of instruction, there is a directive principle of state policies. So certain directives are also given to the state, कि उनको स्टेट के डायरेक्टिव से उनको आप फ्रेम कीजिए, उनको वर्क कीजिए. इन ऑर्डर टू स्मूथली फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक पावर का सेपरेशन है, बट वो सेपरेशन ऑफ पावर इन सच ए वे होना चाहिए कि कोई एक ऑर्गन खुद से डोमिनेट ना कर ले, राइट. अगर वो डोमिनेट कर लेगा तो क्या करेगा, सुप्रीमेसी हो जाएगी, तो वो क्या होगा, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाएगी, या फिर रूल ऑफ द कोर्ट हो जाएगा, या रूल ऑफ द एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, जो कुछ नेशंस में होता है. तो अल्टीमेटली हमें क्या अपहोल्ड करना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अपहोल्ड करना है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड करना है, राइट. सो क्वेश्चन क्या एग्जाम में बना सकता है विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, राइट. First is simply he can ask you what is the doctrine of separation of power. Doctrine of separation of power क्या है, वो simply question पूछ सकता है. Then he can ask you the significance of it, right? Of course, what is the significance? तो significance आपको इंडिया के perspective में लिखना है mainly, right? Thirdly, he says कि why it is inseparable part of the democratic setup. Inseparable क्यों है? Because अगर डेमोक्रेटिक सेटअप का अगर इनसेपरेबल है, इन द सेंस इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी, राइट. तो एक तरीके से सिग्निफिकेंस ही हो गया, वन और अनदर वे में वो पूछ रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट इट विद द रेस्पेक्ट टू द डेमोक्रेसी, राइट. थर्ड इज ही इज आस्किंग, सिंपली आस्किंग कि डज इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सेपरेशन ऑफ पावर. India in the sense they are asking, does Indian constitution, जो Indian constitution, does it provide for the separation of power? If yes, then justify your arguments with examples. Examples क्या हो सकता है, either it is the constitutional provisions or Supreme Court judgment. Am I right? तो आप हमेशा याद रखिए, when you are writing an answer, just try to give example, because it justify your argument. इसलिए एग्जाम्पल का ये इंपॉर्टेंस होता है, वेदर इट इज अ पेपर ऑफ एथिक्स, वेदर इट इज अ पेपर 2 जीएस, राइट, और इकोनॉमिक्स का भी है. देन सब्स्टिट्यूट योर आंसर विद द डाटा, रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटी पेपर, राइट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी framed by the examiner is that does Indian constitution provide for स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, राइट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है क्या, राइट. और बेसिकली द इंडियाज कंसेप्ट ऑफ separation of power is more into check and balance, right. कि स्ट्रिक्ट सेंस में इंडिया का सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, रादर देन इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द चेक एंड बैलेंस, राइट. अगर आप एक स्मार्ट वे से अगर अपना आंसर लिखेंगे तो ये आपको सारी डायमेंशन पता चल जाएंगी कि योर आंसर शुड हैव ऑल दिस डायमेंशन. बट वो डायमेंशन आपकी वेरी कर जाएगी, कब वेरी कर जाएगी, कि क्वेश्चन में किस सेगमेंट को वो ज्यादा पूछ रहा है. कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. अगर वो डायरेक्टली पूछ रहा है कि डॉक्ट्रिन सेपरेशन ऑफ पावर है, देन यू हैव टू गिव मोर पोर्शन टू दिस, आपको ज्यादा लिखना है. अगर वो कुछ और ज्यादा पूछ रहा है, स्टिल यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ पावर, बट आप इसको इंट्रोडक्शन में लिख देंगे 1 और 2 पॉइंट्स में, राइट. तो इसी वे में आपका क्या है कि डायमेंशंस आपके आंसर्स में ये होने चाहिए, और एग्जामिनर के पास भी यही डायमेंशन बनती है कि वो इससे क्वेश्चन फ्रेम करेगा. तो आप हमेशा डायमेंशन याद रखो कि मेरा क्वेश्चन किस डायमेंशन में फ्लो करेगा, मेरे पास कंटेंट ये है, बट बेस्ड ऑन द क्वेश्चन माय आंसर विल बी मोल्डेड, राइट. यहां तक समझ में आया सबको, बताइए, राइट.
So my first question to all of you, so what is separation of power? बताइए क्या है? बताइए क्या है separation of power? Sir, it is basically the division of the legislative, executive and the judicial functions of the government. Okay, division किस चीज का? Sir, power and responsibilities. Power and Very good, very good. So it is a division of power and responsibilities. Right, very good. So there is a division of power and responsibility among organs of government, right? Right. But we know that there are 3 organs of government, right? I am not directly saying 3 because कोई objective थोड़ी है, कोई objective criteria थोड़ी है, 3 ही होंगे, right? So हम अपने introduction में लिख सकते हैं there is separation of power among 3 organs of the government, no doubt, as you said, that is correct. Legislative, executive and judiciary. Very good. Why there is separation of power? Because these 3 organs have their different functions. उनके functions हैं, उनको अपने domain में करने हैं. So while having the power and responsibilities, it also says that each have to perform their respective role within their domain. जो उनको power दी गई है, तो उनको अपने domain में function करनी है without interfering in each other domain. उनको interfere नहीं करना है. So what is the function of legislature? To make law. To make law. Very good. इतना ही precise होना चाहिए. To make law. What is the example of legislature? Parliament. And State legislature. very good. State legislature. So law making power lies with the parliament. What is the executive? What is Sir, the function it of executive? implements the order. Right. Those laws which are enacted by the parliament, they are to be executed by the executives. Very good. Very good. Executive. So there can be 2 executive, permanent, non-permanent. That is fine. What is the function of judiciary? To check the constitutional validity of a particular law. ठीक है. Validity. Fine. Validity of law. To check the validity of law. Very good. Or you can say either these laws are framed as per the provisions of the constitutions. Right. Right. Along with, they also uphold the justice, and they also have to protect the rights of people. Right. There may be laws which may not related to the people, but still, are they protecting the rights of people or they are curtailing the rights of the people? Right. तो इसको ये भी देखना है कि फंडा राइट से वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, कोई लॉ फ्रेम किया आपने तो वो, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपोर्टेंट. देन नेक्स्ट मैं उसको और सिंपलीफाई कर रहा हूँ सो दैट आप कोई मिस्टेक ना करें. सो हु आर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर? वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट, राइट? हु आर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर? बताइए. Sir, the representatives of the people. राइट. स्पेसिफिक नेम बताइए. Sir, MPs and MLAs. ओके. बॉडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय लेजिस्लेचर हो गया, जैसे प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ इट, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बेसिस पे देखेंगे, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ इट, राइट? इज प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और नॉट? Yes. Yes or no? Sir, Because I think a bill cannot he become belongs the to act. executive. I think. A bill cannot become the simple. आप सोचिए, a bill cannot become the act without the assent of the president, right? So he's a part of the parliament. President is part of the parliament or not? Yes, sir. But he's also. I That is don't remember another thing. exactly, but he's also called, I think, executive also. Currently, we are into the legislation segment, right? Yes. So he's the part of legislature also. He's also the part of the parliament. Very good. Then, who's the part of the legislature? The parliament. Simply The tell me Council of Ministers. Very good.
I can say Lok Sabha, right? No doubt, council ministers are there, but I am talking the legislature who make the law. Law कब बनेगा? कोई एक्ट कब बनेगा? कभी when it is passed by the both the houses and get the assent of the president. Am I right? Am I right or not? Yes, sir. लॉ मेकिंग की बात कर रहा हूँ मैं अभी मैं एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉ कैसे बनेगा? क्या जरूरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई बिल लेके आए? इंडिविजुअल मेंबर भी बिल लेके आ सकते हैं, Yes. राइट? तो जरूरी नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। सिंपली यू कैन मेंशन अबाउट द लोक सभा एंड देन यू कैन मेंशन द राज्यसभा। वेरी गुड, समझ में आ गई ये वाली बात? Yes, sir. प्रेसिडेंट एंड फाइन, ये आपके मेंबर हो गए। नाउ कम्स टू द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सो हु आर द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स? टेल मी। Union executives, especially if I talk about union executives. Tell me, who are the member of union executives? So there are political executives and permanent executives. So I'm talking about the non-permanent only. Okay. Union executives, right? The cabinet minister, prime Fine. minister. Fine. Council ministers itself have the prime minister, right? So you mentioned council minister. Fine. Very good. And is president part of the executive union executives or not? Yes. Yes, sir. Okay. तो हमेशा बड़े आदमी का पहले नाम लो ना, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट फॉलो करो, नहीं तो एज आईएएस ऑफिसर और एज एसडीएम यू विल बी प्रेस्ड फॉर इट। अगर आपने बुके पहले गवर्नर को दे दिया, प्रेसिडेंट को बाद में दिया तो, right? So president is also the part of the union executives, right? Then comes to the council of ministers. Very good. So council of ministers is headed by Prime Minister. Very good, very good. So थोड़ा एक्टिवनेस दिखाओ, उससे ये फायदा होगा आपको कि अगर आप मिस्टेक करेंगे, कोई मिस्टेक होगा तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा, right? Now comes to the judiciary. The judiciary having the integrated judiciary. Very good, right? At the top is Supreme Court, then is the High Court, then is the Subordinate Court, right? So ultimately, Supreme Court and High Court has the power of interpretation of the Constitution along with enforcement of the fundamental rights, right? So ये हमारे तीन organs हो गए. Now for the first question is कि does Indian Constitution provides for separation of power, right? He's simply asking you, does Indian Constitution provides for the separation of power or not? बताइए क्या हो रहा चाहिए आंसर? Yes, sir. It provides for separation of power. Yes, to a certain extent, right? वो हम आगे देखेंगे क्यों है. So if you are mentioning the yes, then you have to substitute your answer with certain examples or certain articles of the Constitution, right? Sir, Can you mention? हाँ बताइए. Sir, I think the function of judiciary cannot be discussed in parliament. Very good, very good. What else? The governor and president are provided with certain immunities. Then Article 50 provides for separation of power between, I think, executive and judiciary. Okay. So again, इनके अलावा भी कोई थोड़ा पार्टिसिपेट करिए. सेपरेशन ऑफ पावर का सिंपल मीनिंग ये है कि लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है, राइट? और वो एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये याद रख लीजिए, राइट? बिकॉज अगर आप केवल लिख रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन इट विल क्रिएट द बर्डन फॉर यू, राइट? आप भूल भी जाएंगे एंड देन यू कैन कमिट ए मिस्टेक. इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर किसी ने कुछ मिस्टेक किया, देन अदर कैन नॉट इंटरफेयर इन इट, right? Whether he is doing right or wrong, other cannot interfere within it, right? As there was a Kartar Singh case was there, right? Kartar Singh case was there versus state of Punjab. The judge, under the judgment, High Court said that he clearly demarcated the function of these three organs of the government. He said that it is the function of legislature to frame the laws, and executives helps to implement, and judiciary
has to interpret the law within the limit set down by the Constitution. Right. So all these three organs are assigned certain function, and they have all these three functions have to work within the limit of the Constitution. Right. So first we will discuss those provisions or articles of the Constitution which specifically promote the separation of power. Right. Separation of power in the sense कि कोई organ दूसरे organ में interference नहीं करेगा, whether it is a right or wrong. Right. The first is Article 50. As you said it, Article 50 क्या बताइए मुझे कोई? कोई बताइए. Judiciary from executive. Very good. So it is a part of the DPSP, right? Yes. It is a part of the DPSP, and it clearly says that state shall take actions and steps to separate judiciary from executives in public service of state. So Constitution itself clearly saying that there should be separate judiciary from executive, separation of the judiciary from the executive. It clearly saying that, so that executive cannot interference within the domain of the judiciaries. Fine. यहाँ तक समझ में है? And though it is a part of the DPSP, but there was a famous judgment was there. In that it was said that the separation of the judiciary from the executive is a part of the basic structure. Right? Though it is not the fundamental right, still it is a basic structure, right? So it cannot be disturbed, it cannot be discarded. कोई जजमेंट है, बताइए मुझे क्या जजमेंट है वो? कौन सा? ओके, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बट नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पास किया गया था, उसमें इसमें क्लियरली मेंशन किया था जो अमेंडमेंट था, इट वाज गेट द एज ए एक्ट, राइट? बट लेटर द सुप्रीम कोर्ट made it null and void and said that the separation of the judiciary from the executive is an integral part of the basic structure. It is a part of the basic structure, so it cannot be removed, right? So you have to mention first this article, then you have to substitute your example NGCS, right? यहाँ तक समझ में आया? तो इसमें आप देखेंगे कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन है, वो नहीं कर सकते. तो कॉलेजियम सिस्टम में नो डाउट प्रेसिडेंट अपॉइंट देम, बट अल्टीमेटली इट्स गेट द नेम फ्रॉम द कॉलेजियम. सो वो जज हैं, वो अपने नाम क्रिएट करके देते हैं. बट आई एम सेइंग यू बिकॉज आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, बट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर. देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर अप टू द सर्टेन एक्सटेंट, बट देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 121 एंड आर्टिकल 211, right? It says that the parliament with respect to article 121 and article 211 with respect to the state legislature cannot discuss the conduct of judges, right? So those judges with respect to Supreme Court, High Court, their conduct cannot be discussed in the state legislature and the parliament. With respect to the parliament is article 121, article 211. So again you are saying, you are knowing that that parliament state legislature is a part of which organ of the government? Legislature. Very good. It is a part of the legislature, and they cannot discuss the conduct of judiciary, right? So still there is separation of power. In first case, clearly saying that judiciary from the executive, right? So in this case, judiciary and executive का separation of power. In second case, there is separation of power with respect to the legislature and judiciary, right? Third case is there article 122 plus 1 कर लीजिए, इसमें और क्या है? Article 122 and article 212, right? Very good. 212. So same is with respect to the parliament, same is with respect to the right. So, right. So it says that a court
it restrict the court from inquiring into proceedings of legislatures, right? तो क्या कर रहे हैं कि now in this case opposite हो गया कि judiciary cannot inquire into the proceedings of the legislatures. तो आपने देखा होगा within the judiciary जो proceedings है legislature की, वो they show the money कि हमने bribe लिया. There was a very famous case, note case was there. तो वहाँ पे बताते हैं कि we were offered the bribe. एक bribe का भी केस है. Still they are fighting, they are throwing the chairs to each other, they are using the wrong words, undemocratic words, right? Inhuman words if I say. Still they are not charged by the court because this specifically article mention that कि court उसमें inquiry नहीं कर सकते, right? तो proceedings इसका purpose एक अलग purpose था. Purpose ये था कि so the legislature can function independently because they can conduct or discuss anything that betterment of the people, but they're misusing it. So this is the article which is providing the immunity to the legislature or legislature proceedings, right? Even article 105 is talking about the immunities, right? Talks about the privileges. तो वो भी है within the parliaments, within legislature आप जो functions करते हो as individual collective capabilities में, they are not subject to be inquiry by the court, right? Now comes to the fourth point, article 74 and article 163, right? So article 74 is related to this is a very famous article. It is related to council of ministers, right? At the central level, right? So it clearly says that it restricts the court. If I say court, in the sense it is a judiciary, it restricts the judiciaries from inquiring into the advice tendered by council of minister to president or governor, right? So you know that इसमें किसका है? इसमें अगर आप देखेंगे तो judiciary cannot inquiry into the executive's domain, right? In this scenario, the council of ministry is a part of the executive. So in this scenario, the judiciary cannot inquiry into the executives. The advice is given by the council of minister to the president because president has to act on advice of the council of ministers, right? इस सिनेरियो में आप देखेंगे तो जुडिशरी के लिए क्या है, इसके डोमेन में इंटरफेयर नहीं कर सकते. Fifth point is related to article 361. It provides the certain immunity to president and governor. So when they function as a individual capacity, they are also get the immunity from the court, right? तो उनको immunity मिलता है. तो it also provides a certain immunity to, तो उनका भी क्या है कि वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते उस डोमेन में. तो इट इज बेसिकली फ्रॉम द क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो नहीं कर सकते. तो ये एक तरीके का क्या होगा, उनको अभी सेपरेशन ऑफ पावर हो गया. सो देयर वर सर्टेन केसेस वर देयर, जैसे एमपी में एक व्यापम का केस था व्हेन देयर वाज ए गवर्नर वाज देयर, बट एज ही वाज द गवर्नर एट दैट टाइम, सो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स related to the व्यापम could not be initiated against him. तो ये इस तरीके को मिसयूज भी हो जाता है. So these are the certain articles of the Indian Constitution which provides for the separation of power. So separation of power with respect to the different organs of the government. So you have to clearly mention कि पार्लियामेंट का यहाँ से स्टेट लेजिस्लेचर का कहाँ पे हो रहा है, जुडिशरी से हो रहा है. इन केस लेजिस्लेचर का जुडिशरी से हो रहा है, देन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का हो रहा है. तो जब आप ये पॉइंट्स मेंशन करेंगे देन इट विल क्लियरली शो कि हाँ आपको अंडरस्टैंडिंग है. तो जस्ट क्लियरली ड्रॉ दिस ग्राफ्स और अपना जो मैसेज है वो आप उसको बेटरली क्लियर कर सकते हैं. यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर. वेरी गुड. तो आप आर्टिकल मेंशन कर दीजिए और थोड़ा जजमेंट है वो आप दे सकते हैं उसमें. नाउ कम्स टू द सेकंड पॉइंट. एग्जाम्पल पूछ सकता है कि डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट strict separation of power, or does Indian constitution provide for a strict separation of power, right? Or it is basically promoting the principle of check and balance.
तो वो कह रहा है कि क्या इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज इट प्रोवाइड फॉर द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? व्हाट शुड बी योर आंसर? क्या No, इंडियन sir. कॉन्स्टिट्यूशन? सर It चेक्स is एंड based on the बैलेंसेस. check and balance. वेरी गुड, दैट्स व्हाई हाईलाइटेड दैट. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, राइट? सो एक्चुअली इट इज नोन एज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट or parliamentary form of government, right? So it is also the part of the democratic setup, right? No doubt presidential setup is also the form of the democratic setup. But parliamentary form of government भी होता है, वो भी होता है, क्योंकि council of minister are ultimately responsible to the Lok Sabha in specific cases and to the parliament in general cases. तो आप यहाँ पे देखिए presidents, यहाँ पे भी president से हमारा है, and this council of ministers is also the part of the legislatures, right? क्योंकि वो भी वोटिंग लेते हैं वहां पे भी. एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट्स होता है इनका. तो हमारा बेसिकली जो इंडिया का है वो सेपरेशन ऑफ पावर तो है, बट दैट इज नॉट इन स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है, रादर देन देयर इज ओवरलैपिंग. और ओवरलैपिंग किस लिए? बिकॉज वी वर द ग्रोइंग डेमोक्रेसी rather than promoting the separation of power, we were more into check and balance and accountabilities, right? Because जब आप growing democracy में होते हैं, then your mainly focus is accountability and check and balance, right? Because so that people can remove you. जब उन्हें लग रहा है कि हाँ अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, आप नहीं कर रहे हैं तो आपको रिमूव कर सकते हैं. तो वो क्या हो जाएगा, मोर अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा. बिकॉज अगर आप पता है कि प्रेसिडेंशियल सेटअप होगा तो वहां पर उनका क्या टेन्यूर फिक्स हो गया, प्रेसिडेंट का एक टेन्यूर है, उसको कंप्लीट करने के बाद ही रिमूव होंगे वो. बट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इफ यू नो कि अगर कोई काम ढंग से नहीं कर रहा है, देन पीपल कैन रिवोल्ट. नो डाउट प्रेसिडेंशियल में रिवोल्ट कर सकते हैं, बट इट इज सेड दैट कि पार्लियामेंट में क्या होता है, कॉन्फिडेंस में काम करते हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आके क्या कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं. So it basically promoting the accountability and check and balance, right? So how Indian Constitution is promoting check and balance or not promoting the strict sense of the separation of power? तो अगर कोई चीज strict sense of separation of power नहीं है, तो ultimately there should be the overlapping functions, right? So you can substitute your answer that Indian Constitution does not provide though Indian Constitution provides for the separation of power, but it is not in the strict sense, rather than there are certain overlapping domain within the three organs of the government in order to promote the check and balance and accountabilities, right? तो ये आप लिख सकते हैं. Now we will discuss about the overlapping functions क्या क्या है, because अगर एग्जामिनर इससे स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछता है, then you have to mention which are the overlapping functions, right? So now आप हेडिंग बना दीजिए, overlapping function of executives, overlapping functions of एग्जीक्यूटिव्स. तो एग्जीक्यूटिव्स के अदर टू डोमेन्स में क्या क्या ओवरलैपिंग फंक्शंस है, वो बताइए मुझे क्या क्या है. फर्स्टली विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर बता दीजिए क्या ओवरलैपिंग फंक्शन है, प्लीज टेल मी. Sir, Article 75. वेरी गुड. आर्टिकल 75. Every minister should be a member of the parliament. ठीक है, मिनिस्टर शुड बी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, फाइन. along with if you know that the president is also the part of the executive, right? And also the part of the legislature, right? एक ये हो जाएगा. सेकेंडली प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो दोनों ही क्या डोमेन में, दोनों एग्जीक्यूटिव्स के पार्ट है. एंड एट दैट फाइन, along with you know that the legislature can delegate the power to the executive. डेलीगेशन ऑफ पावर है जो एग्जीक्यूटिव्स कर सकते हैं वो, राइट? दे कैन फ्रेम द रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो लेजिस्लेचर से आप देखिए क्या क्या कन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों में कहाँ कहाँ ओवरलैपिंग फंक्शंस है. ये तो प्रेसिडेंट एक लेजिस्लेचर का पार्ट है, बट एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव से प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहा है. अलोंग विथ द लेजिस्लेचर कैन डेलीगेट द पावर टू द एग्जीक्यूटिव टू फ्रेम द रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट?
फॉर एग्जाम्पल सेबी है, राइट, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, राइट, तो दे कैन आल्सो फ्रेम द रूल्स एंड रेगुलेशन. कोई सेबी एक्ट बन गया, एक एक्ट पास कर दिया, देन सेबी एंड सीसीआई कैन फ्रेम द रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो जो बेसिकली फंक्शन लेजिस्लेचर का था, बट उसमें भी एग्जीक्यूटिव में क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग फंक्शंस हो रहे हैं. ये समझ में आया सबको? बताइए, ये सुनो. Yes, sir. राइट, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि कुछ सर्टेन एरियाज हैं वहां दोनों के फ्रिंज कर रहे हैं, वो दोनों एक साथ कॉमन एरियाज हैं. सेकंड इज जुडिशरी से क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या ओवरलैपिंग फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी, बताइए. Sir, appointment of CGI by executive. Very good. So you can, the president who appoints, you just write the complete statement. The president appoint judges of Supreme Court and High Court, right? The president is acting as a executive here and appointing the judiciary, right, or judges. Fine. Then along with, if you know the tribunals, right? The basically tribunal perform on the basis of the natural justice. Still, they are promoting, they are functioning in the certain domain of the judiciary. Right? वो justice का जो functions है, they are basically performed by the judiciary. But in अगर आप tribunals में देखेंगे, they are appointment of the executives also there. So judges तो होते ही हैं, but executives also the part of it. Right? Along with certain statutory bodies, just like the NHRC is there, CCI is there. There are also quasi-judicial bodies, right? तो आप देखिए इसमें कुछ एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं. तो कौन सा हो गया कॉमन एरिया ऑफ ओवरलैपिंग हो गया विद रिस्पेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव्स. ये समझ में आया? सेकंड इज ओवरलैपिंग ऑफ लेजिस्लेचर्स. लेजिस्लेचर कहाँ ओवरलैप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव्स? कहाँ कर रहे हैं बताइए? Sir, Council of Minister also the part of executive. Very good. So there is a legislature and council of ministry is the part of it. Very good. There is we have the parliamentary form of the government. So it is basically the parliamentary form of government, and that executive is also the part of the legislature. Second is with respect to the judiciary. Sir, Article 61, when Parliament acts as a quasi-judicial body during the presidential impeachment process. Okay, fine. Generally, we use the impeachment word for the president, but you can simply mention the removal of the judges, right? Because in Constitution, the impeachment word is only written for the president. So do not use the impeachment word, or rather you say that the removal of the judges, right? Removal of the judges. So actually, the parliament has the right to remove the judges, right? Or their conduct can be discussed when there is a motion or there is a resolution against for the removal of the judges. तो उस केस में आप कर सकते हैं. So in this scenario, the legislature can remove the judiciary, right? Fine. यहाँ तक समझ में आ गया? Now comes to the overlapping of the judiciaries. Judiciary कहाँ पे कर रही है? सही. Where the judiciary is overlapping with respect to the executives or with respect to the parliament. बताइए. The judicial activism. Very good point. Very good point. ऐसे terms use करो. That is very good points. It is a judicial activism is there or judicially overreach is there. Very good. Very good. And what else? तो ये किस में डोमेन में आपने कर लिया ये? In the domain of the Judicial and the legislature. very good, legislature. Because ultimately the lawmaking power lies with the parliament. But when the directives are given from the judiciary, then ultimately they are curtailing the domain of the legislatures. For example, they're giving the Vishaka guidelines was given by them, and they also gave the banning of the diesels car in the Delhi which are 10 years old, or whether it is a sale of the liquor within the highway, right? So ये काम किसके हैं actually? ये काम उनके हैं, legislature के हैं, law frame करने के लिए. But these directives are coming from the judiciaries, right? So they are overlapping the
legislature. Fine. With respect to the executives, what is that? क्या है बताइए? सर जुडिशियल रिव्यू बोल सकते हैं. ओके, जुडिशियल रिव्यू तो आप क्या करते हैं जब आप लॉ बनाते हैं उसको रिव्यू करते हैं, वो जुडिशियल रिव्यू होता है, राइट? सो एक्चुअली इट इज द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर. You can mention कि certain rules are framed, right? Rules are framed. जब आप कोई rule frame करते हैं, then a rule based on the delegation of the power by the legislature to the executives, in that scenario there can be taken down. For example, if you know that जो कश्मीर में जो केस था इंटरनेट शटडाउन का, तो इंटरनेट शटडाउन क्या होता है? कोई लॉ तो है नहीं उसके लिए, इंटरनेट शटडाउन के लिए लॉ बनाया गया टेलीग्राफ एक्ट जो, बट अल्टीमेटली जो डायरेक्टिव्स आते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव्स देते हैं कि यस देयर आर सर्टेन कंडीशंस आर देयर which are in the interest of the public, so internet should be shut down of this particular area. Executives के domain के functions हो गए because certain delegate there is a delegation of the power to the executive. In that scenario, अगर वो लगता है कि वो unreasonable है, तो judiciary has right to step down. तो क्या करते हैं? स्टेप डाउन कर दिया, उसको हटा दिया कि बहुत हो गया, हटाइए इसको. So this is the domain where judiciary can also step down the orders or the rules are framed by the executive. तो ये सब overlapping functions है. So now next domain is come, क्योंकि हमारे overlapping क्यों है? अब ये क्वेश्चन आता है, why we are having the overlapping? Because we are having the overlapping because we want to promote the check and balance. Because we want to promote the check and balance and accountability within these three organs of government. क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो थ्री organs of government है, ठीक है आप अपने डोमेन्स में काम कीजिए, that is fine, ultimately fine, but you also uphold the rule of law and accountability so that, किस लिए? क्योंकि वन ऑर्गन दूसरे से ज्यादा सुपीरियर ना हो जाए, राइट? दूसरा ये कि अगर वो अपने डोमेन में काम करेंगे, इफ यू आर डूइंग सर्टेन थिंग विद इन योर डोमेन, देन यू आल्सो प्रमोट द एफिशिएंसी, आप अपना काम अच्छे से करेंगे, तो ये पर्पस रहता है. तो हमें क्या करना है? अल्टीमेटली चेक एंड बैलेंस प्रमोट करना है. सो एग्जामिनर कैन आस्क यू कि व्हिच ऑफ द प्रोविजन हाउ the check and balance is promoted among the three organs of the government under the doctrine of separation of power. ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है. So now tell me how the check and balance, वो अलग अलग वे में पूछ सकता है, बट हम डोमेन देख रहे हैं. How the check and balance is promoted through judiciary. बताइए. तो इन द सेंस कि जुडिशरी कैसे चेक एंड बैलेंस प्रमोट कर रहा है एग्जीक्यूटिव का एंड आल्सो लेजिस्लेचर का, बताइए. प्लीज टेल मी. कुछ नए लोग बताइए, कुछ बोलते नहीं आप, बताइए. Judicial review, then With respect to executives, judicial review is with respect to the legislature, you are right, but with respect to the legislature, so you mentioning about the judicial review. Very good. What is with respect to the executives? through the of different constitutional bodies. Okay, what else? Sir, appointment of the judges. Appointment of the judges, then judiciary is held accountable by the executives. That is believe the opposite scenario. This question is related to the how the judiciary is holding the accountability of the executive and legislature, right? Judiciary किस तरीके से accountable कर रही है executive legislature को? Sir, you can struck down the ordinance brought by executive. Very good, fine. Or if I can say president law, am I right or wrong? Read. Right. President law. If there is some president rule, if the governor recommend the president rule, but it is based on the malified grounds, then the Supreme Court has right to struck it down. SR भूमि केस था ना, ये बताया था मैंने आपको, right? तो governor is acting as the executive at this scenario, so he sent the report to the center for the imposition of the president rule, but if it is based on the malified ground, then it can be struck down. So in that scenario, judiciary also upholding the continuity of the executive. Along with, I also told you कि जो delegation of power है,
तो जुडिशरी ने दी एग्जीक्यूटिव्स को, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो फ्रेम किए हैं, राइट, अगर वही अपने आप में अनडेमोक्रेटिक्स है, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ द इंटरनेट शटडाउन, वो कैन आल्सो बी स्टक डाउन। आप साइकिल देखिए, आप अपोजिट मत जाइए, जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी बना रही है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का, राइट, इन द सेंस द एग्जीक्यूटिव ने कुछ गलत किया है, अनडेमोक्रेटिक किया है, बियॉन्ड द डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट कैन बी स्टक डाउन। तो फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव में कोई ऐसा रूल फ्रेम किया, राइट, या रेगुलेशन किया जो अनडेमोक्रेटिक है, देन इट कैन बी स्टक डाउन बाय द जुडिशरी बिकॉज यू कैन रीच टू द जुडिशरी। फाइन, फाइन, समझ में आया आपको? क्या हुआ, सब शांत क्यों गए? Yes, sir. Fine. Same is with the legislature. Legislature का judicial review का case है, you can also mention about the केशवानंद भारती केस, right? वहां पे आपको जो जुडिशियल रिव्यू का जो केस था केशवानंद भारती केस में, तो क्या है वो एक जुडिशली का सिग्निफिकेंट रोल रिकॉग्नाइज करता है विद इन द डेमोक्रेसी, कि हाउ द जुडिशरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट organ of the government that uphold the constitutionalism. It protects the rights of the people. Even you can also mention about those where the rights of the peoples are curtailed by the legislatures. You can also mention that Article 13. You can mention Article 32. You can also mention, right? Or with respect to the High Court, you can mention Article 226. Right? ये समझ में आया किस डायरेक्शन में फ्लो करना है? That is very much important. Now comes to second, कि how legislature maintain the check and balance. किसका मेंटेन करेगा चेक एंड बैलेंस? नाउ देयर आर टू ऑर्गन्स, फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव्स, सेकंड इज जुडिशरीज। बताइए बताइए हाउ लेजिस्लेचर अपहोल्ड So the executive through no confidence motion and different types of cut motions, token motions and all. very good. So there are different type of motions are there. They are instrument within the parliament. By using them, the parliament uphold the accountability or check and balance of the executives. जो motions बताए इन्होंने, cut motion है, right? Then different committees are also there. Ordinance is there. No, sorry, not ordinance. Rather than it is motions, right? It is the motions is there. The very famous is there. Calling attention motion is there. No confidence motion is there, right? So by using these things, they are also held accountable. Even as I told you in the beginning, the Article 74 itself says that. Article 74 itself says that the Council or Minister. No, it is Article 75, I think. Right. The Council or Minister is responsible to the Lok Sabha in specific and legislation in general, right? In the both the houses of parliament general. तो उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो उनके लिए अकाउंटेबल है। तो अगर वो अकाउंटेबल नहीं है, then the no confidence motion can be evoked. They can lose their majority. So in this way, by using these tools, parliamentary tools हैं, parliamentary instruments हैं, उनको यूज करके आप एग्जीक्यूटिव्स को डे बेसिस पे भी उनको अकाउंटेबल बनाते हैं। 0 आवर है, क्वेश्चन आवर है पार्लियामेंट में, अगर स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन आवर से स्टार्ट हो रहा है, देन 0 आवर है, हाफ एन आवर क्वेश्चंस भी रहते हैं, राइट? रिटन क्वेश्चंस भी आप पूछते हैं, मोशंस भी हैं। तो इनके बेसिस पे आप डेली बेसिस पे अकाउंटेबल बनाते हैं गवर्नमेंट को, एक कंटिन्यूस प्रोसेस में पॉलिसीज के लिए भी आप अकाउंटेबल बनाते हैं उनको, लॉ के लिए तो है ही। सो इन दिस वे गवर्नमेंट इन द सेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, राइट, इस तरीके से बना रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी, प्लीज टेल मी हाउ दे आर अपहोल्डिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जुडिशरी। बताइए। The removal of judges. Very good. Simply removal of judges. Right. तो जजेस इंक्वायरी एक्ट है आपका, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, अंडर विच द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड, राइट? तो वो रिमूव कर सकते हैं। तो एक तरीके से इनका भी चेक एंड बैलेंस मेंटेन करके रखा है कि इफ यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू आर सब्जेक्ट टू बी रिमूव्ड, राइट? तो सेपरेशन है, बट दैट is not the strict separations. There is an overlapping function is there, but these overlapping functions are basically to promote the check and balance, right? इस बेसिस में वो लेजिस्लेचर मेंटेन करते हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ अदर
two organs of the government. Now comes to the third one. थर्ड वन में क्या होगा कि हाउ एग्जीक्यूटिव मेंशन द अकाउंटेबिलिटी. एग्जीक्यूटिव्स कैसे मेंशन करते हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इज द लेजिस्लेचर, सेकंड इज द जुडिशरी. प्लीज टेल मी. बताइए. Sir, delegated legislations. Fine. What else? Then for judiciary, Ordinances. the appointments. With respect to the legislature, tell me what else can be the example for it. So the ordinances, the executive passes the ordinance. Okay, that is fine. Ordinance is there. What else? Then sir, president's rule and the government's rule. What is that? What else? Sir, the president has power to summon and prorogue a dissolution of parliament. Very good. The president has certain veto power, and as you know that president has to act on the advice of the council of ministers. You know it, right? The president does not has power to act without the advice of the council of ministers. So it is clearly mentioned. It is within the different interpretation of the courts, Supreme Court, High Court. They clearly says there that president has to act on the advice of the council of ministers, which is headed by the prime minister. So in that scenario, the president acts as the executive, and the bill is passed, which is the function of the legislature, and bill become the act only when it gets the assent of the president. So in that scenario, the president can evoke the veto power, right, on the advice of the council of ministers, right? So very good. With respect to the judiciary, as you told, whether it is the removal or appointment of the judges, it is there, right? Fine. समझ में आया कि अगर आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे विद इन 2 or 3 लाइन, यू विल फेच इट ऑफ गुड मार्क्स, और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा आपकी, आप अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर होगा, राइट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, राइट? सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ? What is significance of it? Please tell me. Can you Sir, it check and prevents the concentration of power in one organ. okay, fine. So it check the concentration of power in one organ, right? Power in one organ, right? Very good. So very good. So it checks on the concentration of power in one organ, right? Very good. What else? So in case there is a one power within the one organ, then it will lead to the, if it is the legislature, then it leads to the despotic government, right? Autocratic government, it can be there. So it will work in the interest of the few people. The majority of the interest will be the compromise, right? Autocratic government ka ho jayega, then it will compromise the rule of law. Very good. What can be the next? Sir, it Sir, brings limits the arbitrariness of the state. Very good, very good. So it will also check the arbitrariness of the government. Very good. So arbitrariness is also same as with the rule of law, right? So if the domain are clearly demarcated, along with they are clearly mentioned that if you violate your norms, you are not doing duty as per the assigned provisions, then you are subject to be struck down. So it check on the arbitrariness of the government, or it promotes the rule of law. Very good. Third. Sir, efficiency of the system. Very good. It also promotes the effectiveness and efficiency of the system. Effectiveness and efficiency of organs of government, right? So because you know that legislative has better understanding of the law making power, executive has better understanding of the executive power or implementing the laws, and judiciary has with respect to the interpretation of the constitutions, right? Because as you know that the judgment is given by the Supreme Court, Delhi High Court, led to the banning of the diesel car within the Delhi, but later within the same judgment was rewrite, right? जो judgment था उसको revise किया गया था दोबारा से कि there were certain diesel cars which are high worthiness, तो वो इतना pollution नहीं करती जिस तरीके से आपने उनको ban किया. Then certain changes were made in the laws, because
दूसरा क्या है कि जुडिशरी डज नॉट हैव कैपेबिलिटी फॉर इट। तो आप जनरली आप देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू द एलजीबीटी राइट, द लॉ वहां पे कोर्ट में जरूर गया था, बट कोर्ट सेड दैट अल्टीमेटली इट इज द राइट ऑफ द लेजिस्लेचर टू फ्रेम द लॉज, बिकॉज वो उनका स्पेयर नहीं है, उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बिकॉज सेकेंडली दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स। लेजिस्लेचर को तो आप लोग डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर हैविंग द मोर पावर। ये भी सिनेरियो है, तो उनके स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो जिनका जो फंक्शन है उनको उन डोमेन में ही काम करने दो। in case they violate it, then it is subject to be restricted, right? It will promote the efficiency and effectiveness in the organ of the government, right? तो क्या होगा, एक पॉजिटिव आउटकम्स होंगे, एक बेटर आउटकम्स आएंगे, right? What else? It will also lead to the accountability of organs of the government. Accountability is आएगा उनमें, check and balance promote होगा, right? And then ultimately it will uphold the constitutionalism and democratic values and principles. Fine, समझ में आया? तो इन केस अगर लेजिस्लेशन ने कोई लॉ बना जाए किसी की लिबर्टी और इक्वलिटी को कर्टेल कर रहा है, फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहा है, जुडिशरी कैन स्टिक इट डाउन। क्या हो रहा है अल्टीमेटली, डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ पीपल आर प्रोटेक्टेड अलोंग विद जुडिशरी रिव्यू है जो आपका, राइट? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है आपकी, जो क्या है वो अल्टीमेटली इट इज प्रमोटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रमोट कर रहा है। फाइन, सो इन दिस सिनेरियो द बेसिक स्ट्रक्चर वेरी मच इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ द three organs of the government, right, within the vision and philosophy of the constitutions, right? समझ में आया सबको? Please tell me yes or no. Yes, sir. Fine. Now issues क्या है? Issues देख लो आप. Because there is an overlapping function is there, so certain issues will be arises out. Issues तो आएंगे ही आएंगे अगर overlapping functions है. What can be the first issue? बताइए क्या इशू आ सकते हैं? Sir, overlapping and not clearly nothing. नहीं वो तो हो गया, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट स्पेसिफिकली बताइए क्या इश्यूज है एक्चुअल में? सर With जुडिशियल example. ओवररीच। वेरी गुड, जुडिशियल एक्टिविज्म या ओवररीच कह सकते हैं। वेरी गुड, राइट? सो वी विल नॉट डिस्कस दिस टॉपिक बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, राइट? हमने डिटेल में डिस्कस किया ना इसको, राइट? इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम खराब जाएगा हमारा। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, फिर मैं डिस्कस करूं समराइज में, बट आई थिंक एवरीवन हैज वेल अवेयर अबाउट दिस टॉपिक, राइट? नेक्स्ट क्या इश्यूज आ सकते हैं बताइए? सर डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देयर इज अ डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। डिले कैसे आएगा? For example, if the enactment of legislature is every now and then challenged by the judiciary, Mhm. then it will lead to delay because ठीक है, ओके, व्हाट एल्स कैन बी स्पेसिफिक बताइए और थोड़ा। Sir, politics over national issues. हाँ ये क्या जनरल पॉइंट्स हो जाएंगे, राइट? आई वांट सम स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे आपने जुडिशियल ओवररीच बोला, जुडिशियल एक्टिविज्म बोला, राइट? काफी स्पेसिफिक हो गया ना ये सारे। आर्टिकल 13 यू कैन इवोक, और दीस आर सर्टेन प्रिंसिपल्स आर देयर, राइट? वो क्या हो सकता है? केसेस बताइए आप मुझे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, राइट? तो एक्चुअली ऑर्डिनेंस जो मेकिंग पावर है वो एक्सेप्शनल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है। अल्टीमेटली जो लॉ मेकिंग पावर वो किसके पास है? वो है आपकी किसके पास है? वो आपके लेजिस्लेचर के पास है। बट ये एक्सेप्शनल पावर को आप जब रेगुलर यूज करने लगेंगे तो क्या होगा? एक इश्यूज क्रिएट हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर में। सेम एज द प्रेसिडेंट रूल, इसको डेड लेटर कहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर सेड दैट इट इज अ डेड लेटर, बट आप उसको इतना स्टार्ट करने लगे, एग्जीक्यूटिव में इतना यूज किया कि वो लेजिस्लेचर का जो फंक्शन था, लॉ मेकिंग फंक्शंस थे, वो भी आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिए बिकॉज यू हैव गिवन मोर पावर टू द एग्जीक्यूटिव, राइट? तो ऑर्डिनेंस पावर क्या है? अगर आप ऑर्डिनेंस के रेस्पेक्ट में अगर रीड आउट करेंगे तो ऑर्डिनेंस पावर अंडर विच आर्टिकल इट इज देयर, कैन यू टेल मी? Sir, 123. Very good, article or article 213, right? With respect to parliament, with respect to the state legislature. So it clearly says that कि जो
ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन है, ऑर्डिनेंस की पावर है, तो किसी ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती हैं, there are certain circumstances which needed immediate action, immediate actions. जो article clearly says that there are certain circumstances which needed immediate actions, but immediate action किस लिए नहीं लिया जा सकता? Why they cannot be implemented? Why the law cannot be enacted? Because with respect to the parliament, either house of the parliament is not in functioning, is not in session, right? Not in session. Because आपको पता है कोई लॉ फॉर्मेशन करने के लिए it should be passed from the both the houses of parliament and get the assent of the president. But अगर कोई एक हाउस सेशन में नहीं है, नो डाउट राज्यसभा इज नॉन रिजोल्यूशन, नॉट सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन, बट सेशन तो होते हैं ना उनके, और लॉ को पास करने के लिए सेशन जरूरी है. तो अगर either of the house is not in session, then it cannot become the act. बट लॉ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक सर्कमस्टेंसेस ऐसी आती है इमीडिएट है, तो उस सिचुएशन में द प्रेसिडेंट कैन promulgate the ordinance. promulgate the ordinance. ये कौन कह रहा है? बताइए, ये बात कौन कह रहा है कि circumstances which needed immediate action, then president has power to promulgate the ordinance. ये कौन कह रहा है? Constitution. Yes. कौन कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेइंग दैट कि जब एक सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ जाती हैं कि when both the houses are not in session, but this situation, the circumstances needed immediate action, then you promulgate the ordinance. But as you know, कि ordinance का is function as a law, right? The force and effect जो ordinance का होता है वो it function as a law. And you know that ordinance, who promulgated the ordinance? Ordinance promulgated by the president on the advice of council of minister, right? यहाँ तक सबको पता है. President has power to promulgate the ordinance on the advice of the council of minister. So it is the executive. The executive is making the law, but ultimately law making power lies with the parliament, in the sense I say it is the legislature, either it is a central or state. तो आपने क्या किया? आप क्या करेंगे? आप क्या किया? आपने सेशन जब तक है तब तो आपने लाया नहीं ऑर्डिनेंस को, अगर वो ले भी आए तो ओवरलैप्स हो गया, राइट? तो आप क्या करें? कंटिन्यूसली ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, rather than bringing the law, you are promulgating the ordinance. तो उसमें क्या कर रहे हैं आप? मिसयूज कर रहे हैं पावर का. तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का मिसयूज हुआ या नहीं हुआ? बताइए प्लीज टेल मी. Yes, sir. Right? Because if you bring the bill within the parliament, and that bill is subject to the debate and discussion. Debate and discussion होगा नहीं होगा उसमें, and debate and discussion होगा, then it will uphold, check the accountability of the executives by the representative of people, right? तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस और अकाउंटेबिलिटी तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपने. ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का पिक्चर हो सकता है क्या? नो, it will compromise the vibrant democracies. In that scenario, there was the continuously promulgation of the ordinance by either governor or either by the president, surpassing the legislature. आप क्या कर रहे हैं? लेजिस्लेचर को सरपास कर रहे हैं, right? Then this case was sent to the Supreme Court or High Court. Supreme Court said that in judgment that there was a case, it is very much famous case with respect to the ordinance. It is the Cooper case 1980, right? Cooper case का 1918 का. In that scenario, they clearly said that कि जो president का satisfaction है, the president's satisfaction is not immune from judicial review and can be challenged on the ground of male fight, right? So firstly they said that कि आपने जो आप ordinance जो promulgate कर रहे हैं, it is not promulgated by the president, rather than it is promulgated on the advice of the council of ministers, right? So it is the function of the executive, not the function of judiciaries, right? So in that scenario, the president is acting as an executive, and it is subject to the judiciary review, in the sense कि accountability उन्हें maintain कर दी उसमें, right? Then one more case is
into the picture in 2017. In that, it clearly said that promulgation of ordinance without legislative consideration would be unconstitutional and violation of legislative role, right? समझ में तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली से कहा कि अगर आप ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं तो कंटिन्यूस ऑर्डिनेंस कर रहे हैं, इवन वन केस द सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेड कि if there is a continuously promulgation of the ordinance then it is a constitutional fraud. उन्होंने ये शब्द यूज किया constitutional fraud, राइट? बट हम उतने हार्ड वर्ड यूज नहीं कर रहे, so that I am using those democratic words. वो भी democratic word है बट थोड़ा अलग easy way में जाएंगे. So ultimately they are surpassing this legislature because law making power within the domain of the legislature. So promulgation of ordinance without the legislature consideration, in the sense अगर आपने ordinance लाए for example and it requires immediate actions, circumstances ऐसी थी, that is fine. आप ordinance लाई है, then when both the houses come into the picture with respect to center, then आप उसको house में रखिए, right? अगर वो house में reject हो जाता है, fine, then उसको leave out कर दीजिए आप उसको. इन केस अगर हाउस में है तो आप हाउस में फिर बिल लेके आइए उसको, जिससे डिबेट एंड डिस्कशन हो. बट आप ऑर्डिनेंस लेके आके लाते हैं तो क्या करते हैं आप उसको एक सरपास कर देते हैं, लेजिस्लेचर को डिबेट एंड डिस्कशन सरपास कर देते हैं. एंड यू आर फ्रेमिंग द लॉज बाय यूजिंग एस जो एक्सेप्शनल प्रोविजन है उसको यूज करके आप लॉ क्रिएट कर रहे हैं बाय द एग्जीक्यूटिव्स. Then court says that issue ordinance should be treated as emergency measures and not as a mean to bypass legislation, right? तो उन्होंने कहा है कि अगर आपको ऑर्डिनेंस इश्यूज करना है, the president has to issue the ordinance, then it should be promulgated only when the circumstances are there which needed the immediate action, emergency situations है तब आप promulgate कीजिए. Still they should not surpass the legislature. Emergency, that is fine, but in case there is no emergency then you should not surpass the legislation, क्योंकि law making procedure that is the function of the legislature, so you have to follow those things, right? समझ में आ गया? अगर ऑर्डिनेंस में इश्यूज और क्वेश्चन का पूछते हैं, you mention the Cooper case, like there is a one Varda case is there, I think, and then you can mention Supreme Court 2007 judgment. It was related to the National Capital Territory region of the Delhi, उससे related case था, right? तो आपको ये पॉइंट्स आपको प्रोविजंस लिखने हैं उसमें. तो इस तरीके से जो चेक एंड बैलेंस है, रूल ऑफ लॉ, जो बैलेंस ऑफ पावर उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहा है. फाइन, व्हाट एल्स कैन बी? ऐसा कोई और केस है क्या, बताइए? प्रेसिडेंट रूल तो है ही, वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी. देयर इज आल्सो द स्पीकर हैज पावर टू डिक्लेयर अ बिल एज अ मनी बिल, राइट? A bill as money bill. So in certain case there was other case था वहाँ पे वो that was sent to the Supreme Court, though later Supreme Court told that कि जो आधार बिल आप लेके आए हैं that is becomes the act, no doubt it is a money bill, but still there is a case is pending in the Supreme Court, 7 judges bench में still अभी भी है. जो बिल लेके आते हैं, this what should be the criteria to determine that a bill is a money bill or not a money bill, or financial bill or general bill, right? तो ये भी एक issues है, because there is a provision that उसमें एक प्रोविजन है कि स्पीकर हैज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू डिक्लेयर अ बिल इज मनी बिल, राइट? उस केस में क्या होता है कि आपको कोई बिल है, आपने मनी बिल कर दिया, तो क्या किया आपने, जो आपकी राज्यसभा है, राइट, हाउस ऑफ द पीपल है, जो अपर हाउस है आपका, राइट, अपर हाउस है, आपने उसकी क्या करी, पावर को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, राइट? बिकॉज इन मनी बिल द राज्यसभा डज नॉट मच पावर, तो ओनली द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा है उसके हैंड में होता है सारी चीजें. एंड अल्टीमेटली हाउस ऑफ पीपल में क्या होता है, जिसकी गवर्नमेंट है, दे आर हैविंग द मेजॉरिटी, सो यू compromise the check and balance. Sometimes you bring the populist policies
देन द सेकंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा, राइट, अपर हाउस है, वो क्या करता है, उसको डिबेट एंड डिस्कशन करके, और सर्टेन पीपल्स व्यू है, और विद इन सर्टेन कमिटीज देयर, सर्टेन जो वेल नॉमिनेटेड मेंबर्स है, दे आर हैविंग द एक्सपर्टीज, तो वो क्या करते हैं, उसको चेक एंड बैलेंस करके रखते हैं. बट आपने अगर एज ए बिल आप स्पीकर ने उसको नोटिफाई कर दिया मनी बिल, देन इट विल इट विल कॉम्प्रोमाइज द फंक्शनिंग ऑफ द राज्यसभा. तो ये भी एक सेपरेशन ऑफ पावर का भी इशू है, राइट. यहाँ तक समझ में आया सबको इशू है, बताइए. ये सुनो, अरे सब लोग इतना शांत क्यों हो गए? Yes, sir. ज्यादा हो गया क्या आज? No, sir. ओके फाइन. नाउ कम्स टू द क्वेश्चन. सॉल्व कर लोगे ना? हमारा पर्पस सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का है. क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? Yes. फाइन, ठीक है. तो क्वेश्चन सॉल्व हमारा हो जाना चाहिए. अब एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा इससे अगर आएगा तो. नाउ कम्स टू द डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म. जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, स्टिल दे कैन आस्क डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म. तो यू कैन मेंशन कि डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए आपको पता है सेंट्रल स्टेट अगर में कोई डिस्प्यूट है, राइट, और अमंग द स्टेट है, राइट. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द फेडरल स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, राइट. इंटरनेट स्टेट काउंसिल इज देयर, देन जोनल काउंसिल इज देयर, नीति आयोग इज देयर, अंडर द आर्टिकल 262 इज देयर, राइट. तो वहां पे आप कर सकते हैं, डिस्प्यूट के लिए कर सकते हैं. Even the judiciary, with respect to the judiciary, right? The judiciary also having the under the article 131 उसको original and exclusive jurisdiction power है with respect to the central state में जो dispute है और among the state का जो dispute है. Then tribunal is there, right? tribunal का भी ये functions है ना, dispute resolution mechanism का है, that leads to the lesser burden of the जुडिशरी. तो जुडिशरी का जो बर्डन है वो कम कर देते हैं. एंड सम स्पेसिफिक लॉ से रिलेटेड कोई इश्यूज है, दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स. तो ट्रिब्यूनल जो आपने किया सेंट्रल ट्रिब्यूनल, स्टेट ट्रिब्यूनल्स, तो वो भी इनके फंक्शंस है, वो आप रीड आउट कर लेना. इट्स नॉट मच इंपोर्टेंट थिंग्स. इवन इलेक्शन कमीशन आल्सो एक्ट एज ए डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म. कोई बता सकता है कब करता है? Sir, in case of dispute to the election of member of parliaments and member of legislatures. वो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जाता है Sir, आफ्टर द इलेक्शन. disqualification. डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन देता है, इट डज नॉट डिस्क्वालिफाई एनीवन. Sir, when Right. there is conflict over the party symbol. Very good. Right. तो पार्टी सिंबल के लिए अगर कोई इश्यूज रहता है, रिसेंटली इफ यू नो दैट शिवसेना इश्यूज वर देयर विद रिस्पेक्ट टू उद्धव एंड देयर इज वन अदर पर्सन, आई थिंक कैन नॉट रिकॉल हिज नेम, राइट. तो दो पार्टी में फिर सिंबल का इश्यूज हुआ था, देन इट इज द राइट ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू एलोकेट द सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टी इन केस देयर इज अ डिस्प्यूट, राइट. तो यहाँ पे भी डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का काम करता है, राइट. देन फास्ट ट्रैक कोर्ट इज देयर एंड यू नो दैट देयर इज अ लोक अदालत इज देयर, it is also work in their domain is there, right. National IBC is there, right. So they also form NCLT, right. National NCLT is there, right. So they also make check into the laws when there is a फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, वहां पे कोई बैंक्रप्सी है किसी बैंक का, तो उस रेस्पेक्ट में देखते हैं. ग्राम न्यायालय एक्ट इज आल्सो पास्ड, राइट. न्यायालय एक्ट इज पास्ड अंडर द 2008, राइट. तो जो लोअर लेवल पे है वहां पे कोई डिस्प्यूट है, राइट, सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स है, उनको शॉर्ट आउट करते हैं, राइट. तो नेशनल क्या बोलते हैं इसको, किसी को याद है? नेशनल कमी लॉ ट्रिब्यूनल्स क्या बोलते हैं? नेशनल कंपनी, राइट. क्या है एनसीएलटी को क्या बोलते हैं, किसी को याद है? Company law tribunal. National Okay. Company Law Tribunal. हाँ वेरी गुड. हाँ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर द आईबीसी एक्ट हो गया, एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर द कंपनीज एक्ट, राइट. वेरी गुड, राइट. तो वो हो जाएगा. एनजीटी इज आल्सो देयर when there is a issues business dispute related to the environment declarations, the NGT is there, right. तो ये आपके डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के हैं, तो आप जुडिशरी में उनको रीड आउट करेंगे, तो वहां देख लेंगे उसको, राइट. So now comes to the very much important representation of people act 1950 and 51, right.
So why these acts are passed, right? What is the role of the election in democracies? इश्यूज क्या है एक्ट में, राइट? इश्यूज क्या है अभी फिलहाल रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट में? अगर इश्यूज है तो रिफॉर्म्स क्या है? तो जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो रिफॉर्म से पूछते हैं कि व्हाट शुड बी द रिफॉर्म इन शुड बी ब्रिंग विद इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो वो रिफॉर्म पूछ सकते हैं, रिफॉर्म भी पूछ सकते हैं, इश्यूज भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली इन लॉज का पर्पस ये है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाना है एंड जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए है उनको क्या करना है, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करना है, उनकी अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करना है। इन केस दे वायलेट थिंग्स, दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, दे शुड बी डिस्क्वालीफाइड, तो जो डेमोक्रेसी उसको वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनाना है, राइट? तो ये बेसिकली पर्पस है इसका। सो यू नो इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे आप? द फर्स्ट टॉपिक शुड बी व्हाट इज representation of people act 1950 and 51. Second, electoral reforms के लिए क्या क्या स्टेप्स टेकन किए गए हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन और नीड टू बी टेकन। एग्जामिनर कैन आस्क यू कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, अभी क्या क्या लेने हैं। देन issues, can you tell me what are the issues with respect to India currently in election? क्या इलेक्शन के लिए क्या इश्यूज है इंडिया के अभी? The state funding of election, criminalization of politics. Very good. Criminalization of politics, very good, right? इलेक्ट्रल फंडिंग की बात कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रल फंडिंग में जो इश्यूज है, वेरी गुड, राइट? और इन चीजों से कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और इसके लिए क्या स्टेप्स आर बीइंग टेकन, राइट? एंड देन टॉक्स अबाउट द रिफॉर्म्स, राइट? along with what can be the better conduction of elections. Still you are saying that despite having the electoral voting EVM है हमारे पास, but still the peoples are not participating with enthusiasm. अब voting percentage देंगे that is nearly to 65 or 70, तो काफी कम है। Even certain areas caste based politics है, आप देखेंगे criminalization है, use of muscles and money power in the elections, तो ultimately they are compromising the ethos and values of the democracies, because free and fair election is the heart and soul of the vibrant democracies, correct? जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होगा देन यू आर नॉट मूविंग टुवर्ड द डेमोक्रेसी। तो ये इश्यूज हैं, अगर वो इश्यूज आपको सॉर्ट आउट करने हैं तो इनमें अगर आप देखेंगे तो कौन कौन स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स हैं, तो आप इश्यूज भी आपके स्टेक होल्डर के बेसिस पे होंगे, इश्यूज एंड रिफॉर्म्स। तो हर द स्टेक होल्डर इन इलेक्टोरल प्रोसेस, बताइए मुझे। Sir, political parties. वेरी गुड, पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर, Voters, वेरी गुड, वोटर्स आर देयर, वेरी गुड, एंड candidates, Election Very good. Commission. very good, candidates there, election commission there, very good, right? So these are the major stakeholders are there. तो हमेशा याद रखो जब आप कोई आंसर्स लिख रहे हैं तो आप स्टेक होल्डर अप्रोच अपॉइंट कर लो, उससे क्या आपको इजी रहेगा मूव करने के लिए, राइट? तो आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ इफ वी एग्जामिन आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है? तो वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, डिफाइन और एक्सप्लेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, राइट? तो बताइए 51 में क्या क्या है, व्हाट आर द फंक्शन असाइंड टू द इलेक्शन कमीशन अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950? Sir, allocation of the seats. एलोकेशन ऑफ द Seats. वेरी गुड, राइट? तो एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेचर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो सीट्स एलोकेशंस हैं within the parliament and state legislature is mentioned under the RPF 1950. What else? Sir, delimitation and Okay, very preparation of electoral rolls. delimitation of the constituency, very good, delimitation of the constituency is there. Then preparation of the electoral roll, very good.
Very good. And then Qualification of voters. very good. Qualification of voter. So these are the major provisions of the Representation of People Act. So recently government ने एक एक्ट भी लेके आए थे under which they tried to mandatory of the Aadhaar. In case आपके पास आधार नहीं है, that is fine, then you can have your voter card. But they tried किया उन्होंने कि नोट के आधार मैंडेटरी तो नहीं है, still they are trying कि आधार लिंक प्रोग्राम चलाया उन्होंने कि आप उससे आप अपना क्या कर लो, आप वोटर्स अटैच कर लें, जिससे क्या होगा कि डुप्लीकेशन ऑफ आधार है वो कम हो जाएगा. इवन दे ट्राइड कि आप साल में 3 बार अपने आप को एज ए वोटर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, बिकॉज इफ समवन इज गेटिंग 18 दे आर सब्जेक्ट टू बी वोट, तो वोट कर सकते हैं वो. तो आप पहले साल में एक ही बार होता था, वो 3 बार कर सकते हैं, राइट, 3 टाइम्स. Allocation of the seats in parliament, that is also the part of the RP Act 1950, and delimitation of the constitution under the delimitation commissions होता है, right. तो delimitation commission gets its power from the RP Act 1950. Their preparation of the electoral roll, right. तो electoral roll की जो amendment लेके आए हैं वो कि 3 टाइम आप कर सकते हैं, you have to mention this act, right. तो ये इसका फंक्शन हो गया. Then what is the provisions under the RP Act 1951? क्या क्या डिफाइन करता है RP Act 1951? Sir, it provides for the actual conduct of the election, Very then good. administrative machineries, Very good. Conduct of elections. How the election should be conducted. Election by elections. Bono, right? How the election by election should be conducted by the election commission, that is under the RP Act 1951. Then he talks about the administrative machinery. Very good. Administrative machineries, right? Very good. And then so disqualification of the candidates. very good. Disqualification of the candidates. तो आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है, disqualification of the candidates, because there are certain issues within the electoral funding or criminal politics, or use of muscles power within the, or use of the caste or religion, or promoting the amenity within the society. So those provisions should be so much strong that it should not compromise the electoral process. So the disqualification of members should be there. तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या करंटली प्रोविजंस है, क्या क्या आप रिफॉर्म्स ला सकते हैं, राइट. देन अलोंग विद इट आल्सो टॉक्स अबाउट द करप्ट, क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस है, राइट, एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस क्या है, राइट. इट आल्सो मेंशन अबाउट द करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस क्या है कि दे कैन बी डन बाय द कैंडिडेट्स, राइट. एंड इट आल्सो टॉक्स अबाउट द क्वालिफिकेशन एंड अलोंग विद द डिस्क्वालिफिकेशंस, दोनों की बात करते हैं, right. Along with it also talks about the registration of political parties. Fine. Yes, so these are the major provisions within the RP Act 1951. तो यहाँ के अलग प्रोविजन है, यहाँ पे अलग प्रोविजन है. Now comes to the disqualification of the member of parliament. So the examiner can ask you to mention the provisions, mention the disqualification provisions of the member of parliament under constitution, either under the constitution or under RP Act 1951. तो क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स हैं, तो हम पहले बात कर लेते हैं RP Act 1951 की, राइट. क्या क्या है बताइए प्लीज. ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि अंडर द सेक्शन 8 of the Indian Constitution, sorry, not under the constitution, rather it is the RP Act 1951. So section 8 of the RP Act 1951 talks about the disqualification of the member of parliament. So कौन कौन से ग्राउंड्स पे आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, बिकॉज सर्टेन ग्राउंड्स होने चाहिए. अगर वो ग्राउंड्स अगर नहीं है, देन जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो अपने आप में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. सो फर्स्ट ग्राउंड इज promoting the enmity between different groups. जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में अगर आप इम्यूनिटी प्रमोट कर रहे हैं, एनिमिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ, राइट. देन सेकंड इज if a member of parliament is found guilty of electoral offense. आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने कोई इलेक्टोरल ऑफेंस किया है और उसमें उसका आ जाता है और कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में है, then he is also subject to be disqualified. Third is
if any member of parliament is imprisoned more than 2 years, अगर आप 2 years से ज्यादा imprisonment है, then he is subject to be disqualified. Even if he is failed to lodge expenditure within the time frameworks. So the RP Act 1950 says that कि जो candidates हैं, whether it is MP or ML, उनको बोला गया है कि you create a separate account for expenditure that are going to be held under the electoral process. जो आप election conduct fight कर रहे हैं उसमें क्या होगा, एक अकाउंट सेपरेट अकाउंट बनाइए एंड उसमें जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं यू हैव टू, आपको लिख के देना उसको इलेक्शन कमीशन को, राइट? जस्ट बिकॉज हर इलेक्शन की एक लिमिट की गई है, बट आपने जो विद इन टाइम फ्रेमवर्क्स में अगर आप जो भी आपने इलेक्शन में खर्च किया अगर आप वो नहीं देते हैं, दैट इज आल्सो द ग्राउंड ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड से, राइट? यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. राइट, सो दीज आर द ग्राउंड आप कर सकते हैं. अब इलेक्टोरल ऑफेंस क्या है? तो इलेक्टोरल ऑफेंस इज नॉट मच इंपोर्टेंट, आप यहाँ पे लिख दीजिए कौन कौन से ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है, दैट इज मोर देन इनफ, बिकॉज इतना वहां पे यूज नहीं होगा. नाउ dilution of disqualification grounds, right? So certain act was enacted by the parliament under which जो disqualification grounds हैं उनको क्या कर दिया, dilute कर दिया गया था. In the sense कि we are discussing it because ऐसा एक previous question आ जाए, तो RP Act 1951 में क्या किया कि the grounds mention कर दिया कि एक member of parliament है, आप उसको disqualify कर सकते हो. But हुआ क्या कि certain member of parliament get disqualified, but parliament ने क्या किया, जो एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया और एक बैक चैनल क्रिएट कर दिया सो दैट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो दोबारा से आ सके लेजिस्लेचर में. सो दैट देयर वाज अ वेरी फेमस केस वाज देयर, लिली थॉमस केस 2013, राइट? सो लिली थॉमस केस में कोर्ट ने ये एक्चुअल इशू ये था कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था. बट इस डिस्क्वालिफिकेशन में ये है कि अगर आप किसी मेंबर को आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे देन ही विल नॉट बी द मेंबर ऑफ द हाउस का मेंबर नहीं होगा, देन यू कैन नॉट अपॉइंट हिम एज ए मिनिस्टर. बट देयर इज अ प्रोविजन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर कोई पर्सन है, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, स्टिल ही कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर. बट कंडीशन ये है कि उनको विद इन 6 months दे हैव टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट? एमएलए और एमपी बनना है 6 महीने के अंदर. देन वो पर्सन को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया एंड देन डिस्क्वालीफाई हो गया, बट आपने बैकडोर एंट्री से उनको क्या कर दिया, मिनिस्टर बना दिया. देन दिस केस वेंट टू the other person, Lily Thomas. This case went to the court, and court said in Lily Thomas case 2013 that कि अगर कोई पर्सन है 2 years और मोर देन अगर डिस्क्वालीफाई होता है, राइट, 2 years और मोर देन देर डिस्क्वालीफाई होता है, देन ही कैन नॉट बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज ए मिनिस्टर्स, राइट? तो आप उसको दोबारा मिनिस्टर्स नहीं बना सकते, एंड दिस डिस्क्वालिफिकेशन विल बी रिमेन अप टू द नेक्स्ट 6 years, राइट? जो उनकी इम्प्रिजनमेंट है वो तो रही ही रहेगा, उसके अलावा भी जो नेक्स्ट है अलोंग विद 6 years तक और रहेगा, तो आप उनको बैकडोर एंट्री नहीं दे सकते, राइट? फाइन, ये समझ में आया? तो लिली थॉमस केस में क्या कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई कर दिया है आपने किसी को, तो आप उसको 90 days का अपीलिंग दे दीजिए आपको. तो 90 days तक आप उसको क्या कीजिए, 19 days उसको क्या करना है आपको, एक अपीलिंग मैकेनिज्म दे रहे हैं, तो 19 days तक आप सेव कर लीजिए उनको. तो रिसेंटली एक राहुल गांधी का केस था, अगर आपको पता हो, राइट, जो मोदी वाला केस था उसमें, तो राहुल गांधी की जब इम्प्रिजनमेंट मोर देन 2 years था, आई थिंक ही वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 4 years, राइट? तो उनकी जो मेंबरशिप थी उसी टाइम पे डिस्क्वालीफाई कर दिया था उनको. बट अर्लियर देयर आर लिली थॉमस केस, उसमें ये कहा था कि अगर आप किसी को डिस्क्वालीफाई करते हैं बट वो अपील करता है जब तक, तो 19 days की आप उसको इम्यूनिटी कर दीजिए, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दीजिए. बट लिली थॉमस केस में इसको कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था, राइट, बिकॉज इट वाज कॉम्प्रोमाइजिंग द आरपी एक्ट 1951. ये समझ में आया प्रोविजन? बताइए, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है.
तो एक तरीके का रिफॉर्म है। रिफॉर्म क्या है कि अगर कोई पर्सन है वो डिस्क्वालीफाई हुआ है बट आप उसको नेक्स्ट डोर से आप उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, देन इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द लॉ इटसेल्फ। तो आप उसको एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड मत कीजिए। देन कोर्ट सेड कि नहीं, अगर कोई डिस्क्वालीफाइड है तो वो उसी दिन से ऑन दैट पर्टिकुलर डे विल बी सब्जेक्ट टू डिस्क्वालीफाइड। ऐसा नहीं है कि 19 डेज का आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको दे रहे हैं उसको, राइट? फाइन। So now text talks about the certain reforms. So you can also mention there are certain dilution of the post of the office of profit. Dilution of office of profit. तो क्या करते हैं कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो मेंशन वन ऑफ द ग्राउंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उस पे आप किसी को क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। सो सर्टेन पोस्ट वर क्रिएटेड, जैसे सेक्रेटरी का पोस्ट क्रिएट कर दिया आपने कि आप सेक्रेटरी का पोस्ट कर दो, आप मिनिस्टर्स को कुछ करने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देन सुप्रीम कोर्ट आल्सो, हाई कोर्ट आल्सो सेड दैट कि नो, जो आप डाइल्यूशन कर रहे हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ऑन द नेम ऑफ द सेक्रेटरी, दे शुड नॉट बी देयर, राइट? सो ऐसा नहीं कर सकते आप कि जो डाइल्यूट करेंगे आप उनको, तो दे आर आल्सो सब्जेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन। सो जो आम आदमी पार्टी, उससे रिलेटेड एक केस था, सेक्रेटरी का केस था, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो सेक्रेटरी का पोस्ट भी है, दैट इज आल्सो ट्रीटेड शुड बी एज ए मिनिस्टर्स एंड इट आल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो आप ऐसे मेंशन कर दीजिए डायरेक्टली कि क्या इश्यूज है डाइल्यूशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डायरेक्टली, राइट? यहाँ तक समझ में आया सबको? नाउ टॉक्स अबाउट द रिफॉर्म्स। रिसेंट रिफॉर्म्स क्या किया गया है, राइट? रिसेंट रिफॉर्म्स क्या क्या आया है? तो फर्स्ट टॉक्स अबाउट द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या क्या है, राइट? तो करंट में ये है कि जो एनआरआई है उनको अलाउ किया गया है टू वोट, अलाउ टू वोट फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो वहां पे आके वोट कर सकते हैं, राइट? और ई पेपर वॉलेट की भी बात, ई पोस्टल वॉलेट की भी बात कर रहे हैं, राइट? देन one more reform is related to the nota, introduction of the nota. The nota is also showing the discontent of the candidates under the article 19. तो वो freedom of speech and expression का है, तो वो जो candidates हैं उनको discontent कर रहे हैं, not the disqualify, rather than it is the provision of discontent। एक तरीके से रिफॉर्म ही है। सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसी करके एक था, पब्लिक यूनियन एक्ट कर एसोसिएशन था कोई, तो उसमें कोर्ट में लेके गए थे, देन कोर्ट सेड दैट कि people have right to express their discontent against any candidates or political party, so they should have provisions for the nota। तो नोटा को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। It is also the part of the reforms, electoral reforms। What can be other reforms by election commission के द्वारा क्या क्या reforms हैं? Can you please tell me? क्या क्या electoral reforms हैं बताइए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1960 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, एवरीवन नोज आई थिंक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, राइट? तो मॉडल ऑफ कंडक्ट क्या करता है, जो मेंबर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, उनको एक म्यूचुअली एक नॉर्म्स क्रिएट कर लेते हैं वो। तो नॉर्म्स में क्या होगा, आप यू शुड बिहेव इन सर्टेन मैनर सो दैट इलेक्शन कैन बी कंडक्ट इन ए फ्री एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, राइट? सेकंड इज कंपल्सरी mentioning of criminal antecedent with election affidavits। जब कोई भी कैंडिडेट्स जब इलेक्शन फाइट करते हैं, so they have to mention कि if there is any criminal record is there, उनको मेंशन करना होता है अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स में। along with they also mention about their properties and assets, right? वो अपने एसेट्स भी मेंशन कर दिया। तो उससे क्या है कि कैंडिडेट शुड हैव राइट्स टू नो कि जो हमारा कैंडिडेट जिसको हम इलेक्ट करने आ रहे हैं उसकी क्या क्रेडिबिलिटीज है, राइट? उसका एजुकेशन कितना है, इवन दे मेंशन अबाउट देयर एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है, उनकी क्रिमिनल इंसिडेंट क्या है, तो ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको भी क्या करेगा, रोकने का काम करेगा, राइट? देन इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम। ईवीएम से क्या होगा, जो बूथ कैप्चरिंग थी उसको रोकने का काम करेगा, एंड इवन जो सीक्रेसी है उसको थोड़ा ज्यादा प्रमोट करेगा। इवन जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको भी स्मूथ करेगा, बिकॉज द ईवीएम इज इजी टू ट्रांसपोर्टेशन, और उनको ले जाने में इजी रहता है, राइट? रैगिंग के भी कम चांस है, बूथ कैप्चरिंग के भी कम चांसेस रहते हैं ईवीएम में। तो इंट्रोडक्शन ईवीएम इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, राइट? देन नोट अबाउट हाँ जी सर सेकंड वर्ड और बाकी बोलिए तो।
This सेकंड वर्ड क्या है? compulsory mentioning of the criminal antecedent with electoral, जो इलेक्शन एफिडेविट है उसमें आपको मेंशन करना है जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है आपके. इवन एसेट्स आल्सो यू हैव टू मेंशन, दोज हु आर फाइटिंग द इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं. Right. Introduction of the EVM is also part of the electoral reforms. Then BVPAT with EVM, verifiable paper audit. ठीक है, उसमें क्या होता है, आपने एक ईवीएम पुश किया, देन एक पेपर आएगा, सो इट विल कंफर्म योर वोट कि आप जो वोट कर रहे हैं वही आपने किया है. तो एक पेपर आएगा, देन उसमें पार्टी सिंबल्स होगा, कैंडिडेट का नाम होगा, राइट. तो आप जो आपने बटन ईवीएम में दबाया वो एक पेपर के फॉर्म में आएगा, जो आप देख लीजिए कि एक जो पेपर ब्लेड की तरह काम कर रहा है वो, राइट. तो वो कंफर्मेशन करता है, वो ट्रस्ट जनरेट करता है लोगों में कि हाँ उन्हें जो वोट कर रहे हैं वही लोग हैं, राइट. देन इलेक्शन कमीशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइंस भी दी है. So election commission also set the guidelines or check the manifesto of the political parties. तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मैनिफेस्टो फ्रेम कर दिए बिफोर द इलेक्शन वो कुछ भी ना बना दें. देयर शुड बी सर्टेन ऑथेंटिसिटी विद इन दोस मैनिफेस्टो. तो जो मैनिफेस्टो है उनका सर्टेन रीजनेबल ग्राउंड्स होना चाहिए कि आप ये नहीं कह सकते हाँ सबको मैं 20-20 रुपए दे दूंगा. तो देन इलेक्शन कमीशन ने आस्क देम हाउ कैन यू गिव, आपके क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, कैसे आपने कैलकुलेशन किया, राइट. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन ऑर्डर टू चेक द फ्रीबीज, राइट, फ्रीबीज कल्चर के लिए, पॉपुलिस्ट मेजर्स के रोकने के लिए. बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से जो इलेक्शन है उसको आप हेम्पर कर रहे हैं, आप लोगों को वो प्रोमिसेस कर रहे हैं, दे आर नॉट रीचेबल, दे आर नॉट डूएबल. तो आप क्या कर रहे हैं, आप इसे इलेक्शन को रिगिंग कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. देन सुप्रीम कोर्ट गिव द डायरेक्टिव्स टू द इलेक्शन कमीशन कि आप एक गाइडलाइंस फ्रेम कीजिए एंड चेक द मैनिफेस्टो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कि दे आर मेकिंग सेंस. ठीक है, तो वो भी है. देन आल्सो बैनिंग ऑफ द एग्जिट पोल. देन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव एक जजमेंट था. देन इलेक्शन कमीशन आल्सो बैन द बैनिंग ऑफ द एग्जिट पोल. तो एग्जिट पोल में क्या होता है, किसी ने वोट किया एंड देन आप पूछते उससे उसका आइडिया लेते कि आपने किसको वोट किया. तो होता ही क्या है कि जब इलेक्शंस हैं अगर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स में हो रहे हैं, तो दे कैन इन्फ्लुएंस द वोटर्स, राइट. तो इन्फ्लुएंस हो जाता है वोटर को, हाँ इस पार्टी को लोग ज्यादा वोट दे रहे हैं, देयर विल बी इन्फ्लुएंस ऑन द वोटर अगर एग्जिट पोल हो रहा है तो. सो देन इट इज सेड दैट कि जब तक किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में या किसी स्टेट में अगर मेंशन किया गया है कि विद इन दीज स्टेट्स में इन फेजेस में इलेक्शंस होंगे, तो जब तक लास्ट डे तक इलेक्शन नहीं होता है इन ऑल दोस फेजेस, देन ओनली यू कैन डिक्लेयर द एग्जिट पोल. बट ड्यूरिंग द इलेक्शन यू कैन डिक्लेयर द एग्जिट पोल. तो बैनिंग ऑफ द एग्जिट पोल ये भी हो गया, राइट. Along with the election commission mentioned that those candidates who are fighting the election, they should have separate account. किसके लिए सेपरेट अकाउंट करना है, फॉर द इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स. ठीक है, उनको क्या करना है, एक सेपरेट अकाउंट एक्सपेंडिचर करना. अलोंग विद जो लिमिट भी फिक्स की गई है, लिमिट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर इज आल्सो फिक्स्ड, राइट. सो जो कैंडिडेट को जो इलेक्शन में जो एक्सपेंडिचर करना है वो भी लिमिटेड है, फिक्स किया गया. इवन दे शुड आल्सो हैविंग अ सेपरेट अकाउंट, इवन दे हैव टू फिल द नॉमिनेशन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम्स, वो भी है, राइट. Along with Supreme Court also said that those political parties who they are nominating the candidates for election, तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है वो आप अपनी वेबसाइट पर 48 आवर्स में आप उसको डिक्लेयर कीजिए कि आपने किसी कैंडिडेट को आपने बोला कि ये कैंडिडेट से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, देन विद इन द 48 आवर्स ऑफ दिट आप उसको क्या कीजिए, डिक्लेयर कीजिए आप उसको, राइट. फाइन. तो ये दीज आर द सर्टेन रिफॉर्म्स ब्रिंग बाय द इलेक्शन कमीशन. उसके अलावा भी कुछ और भी रिफॉर्म्स है, राइट. तो वो एक जनरल रिफॉर्म्स है, आप उनको मैं उनको लिख के भेज दूंगा आपको, राइट. तो दीज वर द फेमस रिफॉर्म्स, राइट. नाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि which of the following initiatives are taken to check the decriminalization of the politics. ठीक है, पॉलिटिक्स की जो डिक्रिमिनलाइजेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, बिकॉज डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एज यू सेड इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज विद इन द इलेक्टोरल प्रोसेस. तो डिक्रिमिनलाइजेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए बताइए.
बताइए. As we discussed first, debarring the candidates from contesting the election. Those who are punished for 2 year or more imprisonment. जिन लोगों को 2 साल या 2 से अधिक है तो फर्स्टली तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं. सेकेंडली जितना उनका सर्विसेज है, जितना इम्प्रिजमेंट है, अलॉन्ग विद 6 ईयर तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं. राइट. तो ये एक क्या है, डिमोक्राइजेशन करने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए स्टेप्स है. सेकंड स्टेप क्या है? Right. Secondly, they also mentioned that the certain electoral offenses and correct practices, as we discussed, ऊपर हमने डिस्कस किया था, are ground of disqualification. Yes, for example, promoting the enmity within the groups, disloyalty is also ground for that. ये certain है किए गए हैं. राइट. देन और क्या है बताइए. Sir, compulsory disclosure of assets and income sources. वेरी गुड. राइट. तो आपके जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, इनकम सोर्सेज है, दैट इज आल्सो यू हैव टू मेंशन. राइट. सो दैट आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहाँ से आ रहा है, एक तो इसकी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर रहा है. एंड क्रिमिनल जो रिपोर्ट्स है आपको वो भी करना है. राइट. तो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स जो अभी डिस्कस किए थे वो भी आपको करना है. वेरी गुड. एंड Sir, a separate court, special courts to वेरी गुड. तो स्पेशल कोर्ट्स भी क्रिएट किए हैं, एमपीएमएलए कोर्ट बोलते हैं उसको. राइट. So that the faster justice can be delivered. Very good points. Right? You can mention those points. Fine. So these are the certain reforms which are taken. Right. Now comes to the break. चाहिए थोड़ी देर के लिए. हेलो. थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर लेते हैं ना. That is fine. okay, sir. थोड़ी देर ब्रेक कर लेते हैं. मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ. फाइन. किसी को डाउट है बताइए, मुझे फिर स्टार्ट करें थोड़ा. किसी को डाउट है बताइए. Does anyone has doubt? प्रोसीड करें बताइए. Yes, sir. Okay, fine. So criminalization of politics. So we have discussed what are the steps are taken, right, to check criminalization of politics. So what are the causes for it? So the examiner will ask you what are the causes for the criminalization of the politics. क्या causes है उसके बताइए. Sir, identity politics. Okay, you can say identity politics. That is not the actual cause for it. If someone is a good person, then how it can be the criminalization of politics? Right? Lack of power.
lack of power to election commission. So if you have observed that during the election campaign, there's a hatred speech are delivered, right? But still, the election commission does not have the right to deregister the political party. So they are having the limited power, election commission. So they are misused by the political parties. So it also leads to the criminalization of politics. If the election commission has the power to deregister the political party, then they can also be held. Haji. Sir, we can divide this answer in different sections like political reason and economic reason, social reason. So in political reason, we can say that winnability factor matters a lot. नहीं इसमें कोई जरूरी नहीं है फैक्टर को मेंशन करो उस डायमेंशन में आप सिंपल No, पॉइंट लिखो winnability factor of a candidate, and it is seen that a person with criminal background wins the election, so they are given the ticket over an honest candidate. ठीक है हाँ गुड पॉइंट बट उसको समराइज कर दीजिए आप So सोशल winnability एक्सेप्टेंस factor takes precedence over honesty and um, over honesty and good work. ऐसा बोल सकते हैं कुछ. आप सिंपल कह सकते हैं सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ द क्रिमिनल रिकॉर्ड्स राइट सिंपल कह सकते हो सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ द क्रिमिनल रिकॉर्ड्स some people the criminal people because of the people either because of the fear they vote for them ऐसे कह सकते हो आप simple either fear or they took them as a godfather image so they vote for them so either due to fear or either due to the image of godfather right so they vote for them right so वो ऐसा लगता है तो better you have good points so you can also mention them the lack of the power of the election commission Can we say that the over costliness of the election? क्या कह रहे हैं आप The costliness of the election. okay yes because the elections are requires lots of money so the people who are moral and have the lesser money so they generally do not fight for it very good so you can mention this along with you can mention about the nexus between politician and criminals right so there is a give and take is there criminal politics the criminals supply or they disturb the elections or they create the fear among the people to vote a particular person in the favor the politicians back up the criminals right so उनको arrest है क्योंकि they ultimately control the executives right so there's a nexus between the judiciary nexus between the politician and the criminals right then what else delay in justice system despite you are having the fast votes MLA MP fast vote but still the justice to deliver in appropriate manner because आप देखेंगे कि चारा घोटाले में लालू यादव को जो punishment मिली थी that was after a very long duration तो still certain MP MLA पे cases चल रहे हैं if you know that nearly I think 13 or 14% are MP or MPs are there in parliament who are having the serious cases serious offenses की बात कर रहा हूँ वैसे तो 30 to 35% अराउंड होंगे जिन पे केसेस है but 13 to 14% है उनके पास serious cases है but despite having the MPLA code but the justice delivery system that is itself a delay right sometimes challenge itself with respect to law itself right तो जो law है तो आपने बना दिया तो certain provisions है they are not more appropriate or even the implementation also compromised तो वो implementation भी compromise हो जाता है then you can mention 6th point lack of accountability of political parties तो आप ये बताइए कि किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है they have to mention within the nomination paper उनको mention करना है but why the political parties are giving them tickets क्यों दे रहे हैं उनको right even the Supreme Court has clearly said that those who are candidates having the criminal records you have to mention your website within the 48 hours of the nominations आपने किसी को टिकट दिया 48 hours के भीतर आप क्या करना है आपको बताना है कि हाँ इसका ये रिकॉर्ड है बट आप पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों को क्यों आप दे रहे हैं टिकट मत दो ना क्योंकि लोग नॉट ओनली गिव वोट ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट फेस रादर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पे भी लोग वोट देते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी शुड आल्सो have the accountability that they should not give the tickets of
to such candidates, right? तो उन लोगों को नहीं देना चाहिए. Sir, And social funding can also. हाँ, issues with the electoral funding, you can say issues with the electoral fundings, right? So for fighting the elections, there is a need of the money, and the supply of money comes from the criminal peoples, right? They supply the, तो वो आप कह सकते हो nexus में आप उसको डाल सकते हो. Electoral funding में even there is a crony capitalism is there, right? So those are the corporate houses are there. They also supply the money to the political parties. So if they do something beyond the laws, or they infringe the laws, so they get the backups from the political party, or even they get the tenders from the political party. So you can also mention about the crony capitalism, right? So you can mention those. There are certain committees also there. Bora committee is there, right? Bora committee is there. So he clearly highlighted the nexus between the politicians, right? And they highlighted the nexus between the criminal bureaucrats and politicians, right? So you can also mention about the Bora committee Bora committee also mentioned about the nexus between the criminal and bureaucrats and politics, right? Use of money and muscles power in the election is very much often, right? So आप देखेंगे जो बाहुबली जो terms use किया जाता है, they are basically for those. What is the impact क्या होगा criminalization of politics का? Please tell me. What is the impact of the criminalization of politics? Impact भी होगा कुछ? Sir, it perpetuates the cycle. Very good. It perpetuates the cycle, right? Very good. What else? It's a lack of trust of people in democratic institutions. Very good. So it compromise the democratic values and reduce the trust of people in free and fair elections. Very good. Sir, corruption and inefficiencies. Very good. It compromise good governance and promotes corruptions and inefficiencies. Very good. What else? Sir, promotes favoritism and nepotism. Very good. It promotes favoritism and nepotism. Very good. What else? Who are more affected by this? So the people itself. Yes, within the people, vulnerable sections. Yeah. Right. It creates the culture of impunities, as you say, impunity, and worsen the condition of vulnerable sections. Right? No doubt, it will ultimately lead to the adverse impact on socio-economic development of the nation. Right? Even, it also compromise the international reputations. Right? एक इंटरनेशनल रेपुटेशन है वो भी तो आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. तो इंटरनेशनल कॉम्प्रोमाइज हुई तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ेगा आपका, तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटीज भी क्रिएट हो सकती है. सो दीज आर द थिंग. इट आल्सो यू कैन आल्सो कनेक्ट इट विद द रूल ऑफ लॉ. तो वो रूल ऑफ लॉ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. सो दीज आर द फैक्टर्स. तो आप उन चीजों को लिख सकते हैं कि कॉज क्या है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए. राइट, फाइन, समझ में आया? So now next topic is related to the वो वाला कर लिया कि हमने इलेक्ट्रोल फंडिंग का? No, sir. राइट, फाइन. तो इलेक्ट्रोल फंडिंग के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स लाए हैं? बिकॉज इलेक्ट्रोल फंडिंग इसलिए जरूरी है कि बिकॉज मनी should not be misappropriately used by the misappropriately used during the electoral process. जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसमें wrongly यूज नहीं होना चाहिए. इवन those who are honest people, they should be also be encouraged to fight the elections. तो इलेक्ट्रो फंडिंग में आप देखोगे काफी मिसमैनेजमेंट है. तो मनी क्या करते हैं, ब्लैक मनी का यूज होता है उसमें, राइट, और इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्शंस either by influencing the voter or luring the voters, right?
or along with it also promotes the criminalization. So as a result, government also promoted the reforms within the electoral funding. So what are the steps taken by the government? Please tell me. और किसी को पता है तो? Sir, I think above 10,000 you have to mention who gave the money. Is it 10,000? Are you right? बताइए. I'm not very sure. Okay, No, fine. sir, 2000. Very good. सर गवर्नमेंट प्रमोट इलेक्ट्रल बॉन्ड. Very good. अगर कैश अमाउंट है आपका, earlier it was 20,000, but in budget 2017 it was raised to the 2,000, right? तो आप कैश डोनेशन 2,000 तक भी कर सकते हैं, right? Anonymously. उससे ऊपर है आपको करना है. Very good. What else? Someone told me about the electoral bond, right? तो electoral bond है, आप electoral bond क्या है? आप though it is promote the anonymity, right? Though it is promote the anonymity, but still it the channel is appropriate channel. जो channel है वो appropriate है, right? Anonymity इसलिए है कि जो डोनर है उस पे ऐसा नहीं है कि आप उस पे एक्शन ले लें. कोई पॉलिटिकल पार्टी है वेस्टेड इंटरेस्ट में जब वो गवर्नमेंट में आती है तो उसके लिए हार्म प्रोड्यूस करें. बट जो चैनल है, बिकॉज यू कैन टेक द इलेक्टोरल बॉन्ड ओनली थ्रू द डिजिटल और एप्रोप्रिएट मैनर. तो आपका जो चैनल है वो आपका एक तरीके से क्लियर हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया कि हाँ आप ऑनलाइन ले रहे हैं उसको या चेक के थ्रू ले रहे हैं. तो वो पर्सन पता चल गया कि हाँ एक जो मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है वो एप्रोप्रिएट है, वो डेमोक्रेटिक है, राइट, एज पर द लॉज है. बट एनोनिमिटी ओनली मेंशन है. वेरी गुड. व्हाट एल्स? और क्या है बताइए. Sir, in corporate funding, there should be approval of the board of directors. हाँ वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल चाहिए. बट अर्लियर देयर वाज अ लिमिट फॉर द इलेक्टोरल फंडिंग फॉर द पॉलिटिकल इलेक्टोरल फंडिंग की लिमिट थी, राइट. देयर वाज अ लिमिट बट लेटर इट वाज रिमूव्ड, राइट. इसको आप क्रिटिसिज्म में भी लिख सकते हैं, राइट. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए, दैट इज द पॉजिटिव साइड. बट अर्लियर देयर वाज अ लिमिट that up to the certain extent of their profit, only profit making can also contribute. But now the limit has been evoked. उसको मेंशन कर सकते हैं. Now issues में you can mention जो आपने मेंशन किए that is there. But one more point you can add in the issues that क्या issues था उसमें एक और है कि political parties are not under the RTI, right? Under the RTI, right? So there is a one provision के जो political parties हैं they are subject to इनकम टैक्स बेनिफिट. तो क्या होता है उनका इनकम टैक्स नहीं लगता उन पॉलिटिकल पार्टी में. बट ओनली दोज पॉलिटिकल पार्टीज आर सब्जेक्ट टू द इनकम टैक्स बेनिफिट हु फाइल इनकम टैक्स रिटर्न विद इन द टाइम फ्रेमवर्क, राइट. तो जो इनकम टैक्स बेनिफिट है जो पॉलिटिकल पार्टीज को वो मिलना है वो तभी मिलेगा वो जो प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेमवर्क्स में अगर वो आईटीआर फाइल करेंगे. इफ यू आर नॉट फाइलिंग द आईटीआर देन दे कैन नॉट गेट द इनकम टैक्स बेनिफिट्स. तो इनको जो हट जाता है इनकम टैक्स है, जो हट जाता है जो उनको फंडिंग आई है वो दैट इज ट्रीटेड एज एन इनकम, तो वो आर नॉट सब्जेक्ट टू द बेनिफिट्स इन केस अगर वो टाइम फ्रेमवर्क्स में नहीं करते. तो एक तरीके से इलेक्टोरल जो है फंडिंग है उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म है, एक अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करने के लिए. स्टिल the political parties are not subject to the RTI. Political party अभी क्या आती है RTI में नहीं आती. So you can mention those things in the suggestions, right? तो आप उनको suggestion में mention कर सकते हैं. So these are the certain things with respect to the electoral fundings. Now talks about the reforms should be brings within the election commission, right? Now, election commission का देख लेते हैं, right? So election commission is the body which has ultimately responsible for the for conducting the election, right? इलेक्शन कमीशन में क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए. तो व्हाट आर द रिफॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन कमीशन. तो एग्जामिनर कैन आस्क यू द रिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन कमीशन. क्या क्या रिफॉर्म्स है बताइए. या फिर एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट आर द Digital transactions, ओके banning डिजिटल cash donations. वो तो अभी भी है. आप लिमिट मेंशन की गई है. if you have to donate more than 2000 then it should be through the digital और चेक. तो वो तो हो गया. रिफॉर्म्स क्या क्या होना चाहिए आरपीए में ये मान लीजिए.
और विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या क्या होना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन ये कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स नीडेड इन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? Sir, overall election or देखो, election funding? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ओवरऑल रिफॉर्म्स। क्या रिफॉर्म्स होने? अभी रिसेंटली एक बिल है, इफ यू नो, बिल इन पार्लियामेंट वाज पास्ड, राइट? सो हैव यू read about it कि क्या पास किया गया है? ओके, एक मैं दोबारा से लिंक शेयर कर रहा हूँ, शायद किसी को कोई आउट हो गया तो वो ज्वाइन नहीं कर पाया, राइट? सो आई एम सेंडिंग यू द लिंक अगेन। मेरे पास एक मैसेज आया, तो कोई स्टूडेंट है वो ज्वाइन नहीं कर पाया है बिकॉज, राइट? कैन आई सेंड यू लिंक अगेन? प्लीज टेल मी। हेलो, मैं आपको लिंक दोबारा से भेज रहा हूँ, राइट? कुछ किसी कैंडिडेट को ज्वाइन नहीं कर पाया, वो मैसेज आया उनको भी। ओके, बताइए। Okay. ठीक है।